Good morning, everyone. सत्य सुंदर गुड मॉर्निंग मैम आगुआ ही लिखी देले समस्ते जल्दी जल्दी टिके जॉइन हो जातु। गुड मॉर्निंग एवरीवन समस्ते समस्त को शुभ सकाळ। तो आज एते दिन पर ही मु यूट्यूब सेशन ने आपण मानकर जूनियर टीचर बा असिस्टेंट टीचर एग्जाम पाई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो क्लास स्टार्ट करूची। आज हमर फर्स्ट क्लास जेहेतु ओएसटी एग्जाम थिला काली तार स्वाहा पड़ी सरीबा परे आज ही हमर जेटी आरंभ होउची। गुड मॉर्निंग एवरीवन समस्त टिके जॉइन हे जांतु। फास्ट टिके मु समस्त को देखि दिए एठी समस्त आसी जांतु चटापट ताबरे हमें हमर क्लास स्टार्ट करबा। सुज्ञानी गुड मॉर्निंग। ओटीटी रिजल्ट सुप्रभात जनवरी 20 सुधा टेंटेटिव दिया हेतिला किंतु आसी नाही किंतु एतिकी होप रखी था तुमरो जनवरी एंड सुधा को भी मोमेंट रे तुमरो ओटीटी एग्जाम रिजल्ट आसी जिवो। जनवरी फेब्रुआरी केबे भी हबो नाही। ओएसटी एग्जाम सरीलाणी ओटीटी रिजल्ट बहुत जल्दी आसीबो काइना सही रिजल्ट ही डिपेंड करे तमरो जो असिस्टेंट टीचर एवं जूनियर टीचर आसीबार माने जो आमे कहिबा रास्ता गोटे। आज ओवरऑली आनी छी एंड नेक्स्ट क्लास रो सिलेबस वाइज करी आज जेतु फर्स्ट क्लास सब थ्रू टिके 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 मिसी मिसी करी अछि बबुल निहाती भाबरे। तो गुड मॉर्निंग लक्ष्मी प्रिया 82 जन जॉइन हेछंती जहा हो बहुत बढ़िया। समस्त जूनियर टीचर पाई प्रिपेयर करू छ ना असिस्टेंट टीचर पाई भी प्रिपेयर करू छ? केबे आसीबो कि मैम जेटी जेटी देख मु एबे जदी कहबी ना जदी ना आसिला पुनी तमे मते सोतिबो कि ये कहिथिले आउ जेटी आसिला नाही हला सेमती आमे गेस करूछे कि जेटी जहाँ भी नोटिफिकेशन जहाँ भी किछि गोटे जाई कि ऑफिस रो बुझा जाउची किंबा जहाँ इन्फॉर्मेशन किंबा जहाँ पोस्ट रो रेफरेंस आसुची सेही थ्रू आमे कहि परिबा कि फेब्रुआरी लास्ट मार्च जोटा तमरा फाइनेंशियल ईयर आसुची जेतेबेले बजेट प्लान होउची सेही समय रे तमरा जेटी रो नोटिफिकेशन टी आउट हबो। एही रो पॉसिबिलिटी रखी कि आमे माने जाउछे किंतु किए पचारणी राकेश कुमार साठुआ मैम आपण सिटी ना बीएड मोर राकेश बीएड एंड एमएड मु सिटी करी नाही मु बीएड करिछि आफ्टर दैट एमएड करिछि। ओके रिजल्ट अपेक्षा करि थाओ ए जनवरी लास्ट सुधा निहाती भाबरे आसी जिवो। डोंट माने मु तुमको एतिके एश्योरेंस देबी कि बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एमिति भाबनी कि एग्जाम केबे आसीबा हमें सेबे प्रिपेयर होबा कहीं ना आम सब बेले जाचे तुम भितर केते जन ऑलरेडी आउ थरे एग्जाम दे सारी कि एटा तुम सेकेंड टाइम एग्जाम होउथबो कहार तुम मान भितर एटा फर्स्ट टाइम हेइथिबो अदर एग्जाम्स हमें देइथिबो एंड हमें जो भी एग्जाम दउ ओटीटी हो ओएसटीटी हो किंबा जे कोनोसी भी एग्जाम हो पिला माने आमे एतिकी जानिचे कि सफलताटा गोटे दिनर नुह आमे केते परिश्रम करूची तम माने नुह मु एटा कहि देबी तमे केवल मो क्लास ही देखुथबो मु से ग्यारंटी देबनी एना मु हेले भी मु जदि जने आशाई मु भी बीएड करिछि मु भी एमएड करिछि मु भी जानिछि मु भी जेबे मो जीवन प्रिपरेशन करे किंबा करूथिली आमे निहाती चारि अडु एई बही पढी दबा कि एई जिंसटा करि दबा कि एठू सोर्स आनी बाहरी कि मते कोठू क्वेश्चन गुडा मिले जीव मु कोठू बेस्ट वे रे प्रिपेयर करि परबी कि एटिए भलसे बुझौछंती कि मु देखि देबी तो आम माइंड रे एई सब पिला माने निहाती भाबरे आसी थाए आम माइंड रे कि आमे एई जिंस गुडा चकचक हेकी चली थाए एंड आमे प्रिपरेशन करू थाउ गोटे दी दिन नुह जी सफलता पाती पाई सारा पर कहती कि ना मु एठू पढ़ुली से पढ़ुली मु सफलता पाईगली हुए तो तुम मान भर काली कहीं भी एमती कहीपार किंतु ये सफलता गोटे दुई दिन नुह मे भी तुम आगुरी सेमती कंसिस्टेंटली तुम सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट नॉलेज तुम रही ना मे भी तुम्हें माने एबे प्रिपरेशन टा बहुत दिन मु जूनियर टीचर हेबी ही हेबी मु माइंडसेट रखिकी मु सिटी पढ़ला दिन मु मोर प्रिपरेशन करूची। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्लास आउ डिले न करके स्टार्ट करवा बास एतिकी भाब आमर हब आमर जदि भाभी पारुन मोरी हब मु पारिबी एतिकी भाबिकी आगको बढ़। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन दैट ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टॉय। उमाकांत
ठीक अच्छी उमाकांत किसी ना प्रिपेरेशन एठू ही आरंभ कर हेल्थ तो पूरा पूरी भाव में ठीक है नहीं बट आग अपेक्षा ठीक अच्छी व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टाई बी समस्ते सेफालोकोडाल प्रिंसिपल कहले वेरी गुड एंड प्रॉक्सिमोडेटल कौन सेंटर टू पेरिफेरी सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट बा पेरिफेरी ओके ताहले आमे एठी देखिबा कि से सेम क्वेश्चन ओटीटी रिजल्ट केबे आसीबो ओटीटी रिजल्ट केबे आसीबो वेट करो पिला माने आसीबो बहुत जण मध्ये अपेक्षा करूछंती तो कौन प्रॉक्सिमोडेटल हला हमर जनरल टू पेरिफेरी आमे जिबा एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भितरे बेसिक डिफरेंस कौन वेरी गुड प्रेमशिला बहुत बढ़िया अप्रोक्सीमेटेटल प्रणाम गुड मॉर्निंग समन्विता एंड यस मु काली गोटे वीडियो भी करी पिला माने कि जोटारे कही आमर ओएसटीटी रे आमे जति यूट्यूब क्लासेस करिथिले सेठी 25 रु 30 क्वेश्चन आसीची सेइसरे मध्ये जणे जणे क्रिटिसाइज करिथिले कि तमे जहा पढेइथिलो सेया आसी नाही बरम सिलेबस वाइज क्वेश्चन आसी किए सी तो मु पर्सनली जानी नहीं कहीं मु एते पिला पर्सनली केमती जानी बट गोटे जिनस एगुड़ाक भी तुम सिलेबस रे अच्छी किंतु जदि तुम डायरेक्टली गोटे क्वेश्चन आसीगला प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टय सेफालोकोडाल ताले आमे भाबिबा कि नहीं कि यस एटा मु प्रैक्टिस करिथिली क्लास रे बोली निहाती भाबे रे मु आज एग्जाम रे लिखि पारिली ओके तो सेही भली तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भितरे बेसिक डिफरेंस कौन छाड़ पिला माने ग्रोथ आउ डेवलपमेंट भितरे बेसिक डिफरेंस कौन ना ग्रोथ टा कौन स्टॉप हो जाए आफ्टर मैच्योरेशन बट एटा कौन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस देन एटा कौन जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बा आमे कहूचे ओम टू टर्म बा एटा गोटे मैच्योरेशन बा स्पेसिफिक पीरियड हो जाए थाए ग्रोथ इज मेजरेबल एंड डेवलपमेंट इज कौन ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल बा प्रेडिक्टेबल आमे प्रेडिक्टेबल वे रे बा ऑब्जर्व वे रे आमे कहि पारू ओके यस ग्रोथ इज फिजिकल व्हेयर इज डेवलपमेंट इज मेंटल और डेवलपमेंट इज ऑब्जर्वेबल एंड ग्रोथ इज तमरो कोन ना मेजरेबल यस डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बट ग्रोथ स्टॉप्स एट मैच्योरेशन जेमति आमे कहि परिबा ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज it is quantitative in nature but it is both काहे कि ना डेवलपमेंट अंडर रे भी तमरो ग्रोथ आसुची हमर जो हैंड्स लेग जहां भी हमर ग्रोथ होउची सेही डेवलपमेंट अंडर रे ही होउची तो हमें कहि परिबा कि राकेश कुमार कहछन एई क्वेश्चन डायरेक्ट आस्तिला खाली वेस्ट टेड निहाती भाबरे पिला माने ए सब तुम सिलेबस रे अछि आ तुम सिलेबस बाहर से केते पकेइबो जदी तमे एमती देखो आमे एठी डिस्कशन करूचे सपोज एठी हमें सेफालोकोडाल और प्रॉक्सिमल डिस्टल पढिले हमर क्वेश्चन हेड टू टय ना आसी मु जेमती कहली सेंटर टू पेरिफेरी मे बी हमर परीक्षा रे आसी जिवो प्रॉक्सिमल डिस्टल काहा को कुआ जाय ना सेंटर टू पेरिफेरी बा सेंटर टू एक्सट्रीमिट को आमे कोन कहू ना सेफालोकोडाल आमे एठी पढिले एटा मैच्योरेशन ने स्टॉप हे जाय एटा लाइफ लॉन्ग ओम टू टर्म चली थाए ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट इज बोथ देन इट इज मेजरेबल इट इज ऑब्जर्वेबल बा प्रेडिक्टेबल इन नेचर तो कोन एई सब जिंस तुमरा परीक्षा रे कोउठी भी तुमरा आसी पारे आसीबो कि नहीं तो सेही भली भाबरे सब जिंस प्रैक्टिस करले निहाती भाबरे परीक्षा रे सेही जिंस गुडा तुमरा रिपीटेडली आसीबो प्रियंका यस बोथ मितांजलि ठीक कहछ डेवलपमेंट होची बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट जोटा फिजिकल चेंजेस ग्रोथ होची कोन ना तमरा ओनली फिजिकल चेंजेस व्हेयरएस तमरा डेवलपमेंट कोन ना फंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस फंक्शनल और बिहेवियरल
आमे केवल हाइट रे बढ़ी गले आमे कहूचु से पिलाटा डेंगा हे गला सेही पिलाटा मोटा सेही पिलाटा एया सेही पिलाटा सेया बट जेतेबेले आमे डेवलपमेंट केमिति जानु जे सेटा आमे ऑब्जर्वेबल काहे के कहले आम बिहेवियर रे सपोज मु टिके मैच्योर बिहेवियर कली मु सिचुएशन को बुझी पाइली ताले जणे कहूची यस से बे मैच्योर हे जाय छन्दी किबा से सिचुएशन को बुझी पारु छन्दी तारा सिचुएशन को बुझिया पई कैपेसिटी आसी छी ओके ग्रोथ इज एक्सटर्नल इन नेचर एटा कोन एक्सटर्नल जोटा आम बाह्य एनवायरनमेंट रे होउची से जिनसडा आमे कहूचे एंड डेवलपमेंट इज इंटरनल इन नेचर ए सब जिनस गुडाक ए सब टर्म गुडाक टिके मने रखिथिबो कि एटा मैच्योरेशन स्टॉप हे जे एटा लाइफ लॉन्ग इट इज मेजरेबल इट इज ऑब्जर्वेबल इट इज क्वांटिटेटिव इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इट इज फिजिकल इन नेचर बट इट इज फंक्शनल एंड बिहेवियरल चेंज इट इज एक्सटर्नल इन नेचर इट इज इंटरनल इन नेचर नेक्स्ट जीवा कि moral reasoning based on social approval and law and order orientation is seen in pre-conventional level na conventional level na post-conventional level na autonomous morality कोउथरे पिला माने वर्षा रानी कहले ओके समस्ते टिके आंसर दबा को ट्राई कर कन्वेंशनल 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 मैम एटी आसीबनी बा बी ऑप्शन बी ठीक अच्छी वेरी गुड समस्तंगर कन्वेंशनल स्टेज जोटा कि कोहलबर्गर थ्योरी काली भी पिला माने गोटे ओएसटीटी रे गोटे क्वेश्चन आसीथिला एइथिरु कि जो कोहलबर्गर थ्योरी रो तीनटा लेवल थिला तांकर जो स्टेजेस गुडा थिला एई भितरु कोउटा तांकर स्टेजेस रे आसुनी जोटा गोटे ऑप्शन रे थिला पिला माने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तांकर स्टेज रे आसु नाही सेटा हबो आ ओबीडियंस बाय लॉ एंड ऑर्डर तापरे जोडा गुड बॉय गुड गर्ल एई सब गुडा का ऑप्शन ने थिला तो किंतु थिला गोटे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोटा तांकर स्टेजेस भितरे हबो नाही काली तुमरा परीक्षा आस्थिला जोटा कि हमें बहुत बार वीडियो रे मध्ये रिपीटेशन करिचु तो तांकर कोन तीनटा लेवल जोटा कि प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल ले हमर दीटा स्टेज रहिची ओबीडियंस तमर जोटा देन तापर तमर रहिची इंडिविजुअलिस्टिक रियलिस्ट थ्योरी ओरिएंटेशनल रिलेटिविस्ट थ्योरी देन तुमरा कन्वेंशनल रहिची कन्वेंशनल ले तमर मध्ये आसुची सोशल कॉन्ट्रैक्ट जोटा तमरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट आसीबो पोस्ट कन्वेंशनल ले लॉ एंड ऑर्डर तमरा आसुची कन्वेंशनल ले तो इठी देची सोशल अप्रूवल एंड लॉ एंड ऑर्डर सो दैट इट इज कन्वेंशनल करेक्ट हैला तापर गुड बॉय गुड गर्ल तमरा कन्वेंशनल ले आसीबो देन पोस्ट कन्वेंशनल ले सोशल ऑर्डर एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तमरा आसीबो ओके तो सेथि लागि तीनटा लेवल छटा स्टेज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट टिके पिला माने एटा इरेज करि दिए ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एटा ओरिएंटेशनल स्टेज by individualist relative stage आसे कन्वेंशनल ले गुड बॉय गुड गर्ल लॉ एंड ऑर्डर एटा होची सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड कोन ना तमरो एठी कहजी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तो तीनटा स्टेज रो छटा स्टेज आ तीनटा लेवल रो छटा स्टेज यस नेक्स्ट बा 3 नंबर which factor has the maximum influence on emotional development of a child को फैक्टर टा गोटे चाइल्ड रो इमोशनल डेवलपमेंट को बेसी इन्फ्लुएंस करूची स्कूल करिकुलम ना पीयर ग्रुप ना फैमिली एनवायरनमेंट ना हेरिडिटी को फैक्टर टा पिला माने
तो बी सी मैक्सिमम फैमिली फास्ट हम पिला माने ऑप्शन सी जो माने दउछ करेक्ट आंसर हम तुम्हें फैमिली रो जाई सारिला पर ही प्योर एनवायरनमेंट को जाई परिबो ओके तो फास्ट होची तुमरा फैमिली एनवायरनमेंट सेकेंड होची तुमरा पीयर ग्रुप जेते बेले तुम स्कूल को जीव सेते बेले तुमरा पीयर ग्रुप तुमरा बिहेवियर तुमरा इमोशनल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करिवे बस फास्ट केमिति तुम इमोशनल कंट्रोल करबो केमिति इमोशनल बैलेंस करबो सेही सब जिंस किए बुझिबे ना फैमिली एनवायरनमेंट ओके क्लियर नेक्स्ट जीवा पूर्व पे माने गोटे इनफॉरमेशन जो माने भी मो सहित यूट्यूब फैमिली कनेक्ट हवा पई चाहूछ देख टॉप ऑफ द तमर जो कमेंट सेक्शन में मु मोर टेलीग्राम रो लिंक दे देछि से लिंक रे जॉइन है कि तुम माने मो सहित डायरेक्टली कांटेक्ट रे आसी परिबो आगु समस्त क्वेरी थिला कि टेलीग्राम चैनल टॉप रे मोर टेलीग्राम चैनल लिंक अछि से लिंक रे जॉइन है कि तुम डायरेक्टली मो सहित मो चैनल ले कनेक्ट हे परिबो ओके नेक्स्ट 4 नंबर डेवलपमेंटल डिले रिफर्स टू व्हाट डेवलपमेंटल डिले टा कौन रिफर्स करे ना स्लोअर रेट ऑफ अचीविंग माइलस्टोन ना एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ना बिलो एवरेज इंटेलिजेंस ना इमोशनल डिस्टर्बेंस कौन होबा पिला माने 4 नंबर डेवलपमेंट डिले रिफर्स टू जो हमर डेवलपमेंट टा डिले हुए सेटा कौन पई हेई थाए सेटा कौन रिफर्स करी थाए ठीक अच्छी मु बहुत दिन ट्राए करूली बहुत डिले रे चैनल क्रिएट हैला ए यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कौन ना स्लोअर रेट ऑफ अचीविंग माइलस्टोन टा कौन होता है डेवलपमेंट डिलेज होता है कहार स्लो होता है डेवलपमेंट टा कहार रैपिड वे रे होता है आमे कहि परिबानी आमे जानिचे सेथि लागि आमे कहूचे नो सिंगल इंडिविजुअल्स आर अलाइक तो दीटा सिंगल इंडिविजुअल सेम टाइप रो नुहंती तेणु से जिनसा कहुई 5 नंबर देख लर्निंग थ्रो ट्रायल एंड एरर वाज प्रपोज्ड बाय एटा तो आमे समस्त करि परिबा कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग टा किए प्रोवाइड करछनी पावलोव स्किनर थॉर्नडाइक बांदुरा माइलस्टोन माने थ्रो आउट जोटा तमरा प्रभाती चली तमरा माइलस्टोन यस थॉर्नडाइक कहितले ट्रायल एंड एरर एंड पावलोव कोन क्लासिकल कंडीशनिंग रो हमें जदि कहि परिबा स्टिमुलस रेस्पॉन्स कथा किए कहिसंदी ना ये कहिसंदी बांदुरा कोन कहिसंदी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्राय टाइम एमिति पकई दोची ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विषय रे किए कहिसंदी ना बांदुरा थॉर्नडाइक कौन कहते ट्रायल एंड एरर पावलोव को क्लासिकल कंडीशनिंग अनुसार जाना पड़े ओके माय फेवरेट साइकोलॉजिस्ट पिंटू कहलेनी आल्सो पियाजेट बहुत बढ़िया नेक्स्ट जीवा 6 नंबर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एम्फासाइजेस जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एबे हमें कहले अल्बर्ट बांदुरा द्वारा दिया एछि से कौन एम्फासाइज करथांदी रेनफोर्समेंट इनसाइड कंडीशनिंग ना मॉडलिंग कोटा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टा कौन एम्फासाइज करि थाए रेनफोर्समेंट इनसाइड कंडीशनिंग मॉडलिंग वेरी गुड ज्ञान मंजरी मॉडलिंग तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी मॉडलिंग नेक्स्ट फटिग्यू मेनली अफेक्ट्स लर्निंग बाय फटिग्यू टा लर्निंग द्वारा कौन अफेक्ट करि थाए यस वर्षाराणी इमिटेशन एंड मॉडलिंग बांदुरा 7 नंबर कौन हम समस्त आंसर दियो फटिग्यू मेनली अफेक्ट्स लर्निंग बाय वेरी गुड ऑप्शन बी दैट इज लोअरिंग अटेंशन एंड इंटरेस्ट जो आमे कहूचे कि आमर फटिग्यू आमर जो हार्मोनल चेंजेस आसुची
कि किसी भी आमर जेनेटिकल जो जिनस द्वारा आमर हार्मोनल चेंजेस होउची फटिग द्वारा तार कौन होता है सेटा मेनली आमको अफेक्ट करि थाए कौन ना क्लासरूम रे आमर माने कौन अटेंशन केमिति रहइबा आमर इंटरेस्ट केमिति रहइबा ताकू अफेक्ट करि थाए तो लोअरिंग अटेंशन एंड इंटरेस्ट अफेक्ट होई थाए कहा द्वारा ना फटिग। नेक्स्ट 8 नंबर लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन rote memorization is encouraged, conflict is difficult, new knowledge is related to previous knowledge, na teacher dominates the class. Learning becomes meaningful. Learning ta meaningful hei pare kete bale Option C, बड़ा option yes. New knowledge is related to previous knowledge. Okay. Next. Now number the most appropriate classroom strategy for inclusive education is lecture method, individualized instruction, rigid evaluation, na competitive learning. The most appropriate classroom strategy inclusive education पाई कोटा most appropriate classroom strategy पिला माने ऑप्शन बी समझते देलेनी वेरी गुड बहुत बढ़िया तो राइट आंसर होची कौन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन तो गोटे इंडिविजुअल कौन चाहूची तार कोठी कौन कौन डिफिकल्टीज अच्छी को प्रकार डिजाबिलिटी से स्पेसिफिक पिला पाखे अच्छी से इंस्ट्रक्शन देकी ही हमें ताको पढ़ेबा CWSN स्टैंड फॉर चिल्ड्रेन विथ वीक स्टडी नीड्स ना चिल्ड्रेन विथ विजुअल सपोर्ट नीड्स चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स ना चिल्ड्रेन विथ सोशियो कल्चरल नीड्स ज्ञान मंजरी ठीक अच्छी नेक्स्ट क्लास जेटीपीआईक्यू निहाती भाव नहीं आसवा डोंट वरी तो ऑप्शन सी चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट 11 नंबर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड मेनली एम्स टू एड्रेस करिकुलम लोड ना जेंडर डिस्पैरिटी ना लैंग्वेज बैरियर ना इंटेलिजेंस गैप एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड मेनली एम्स टू एड्रेस व्हाट तो यार राइट आंसर हम कौन ना ऑप्शन बी दैट इज जेंडर डिस्पैरिटी आमे एजुकेशन गर्ल चाइल्ड मान को दौचे कहीं ना सोसाइटी जो जेंडर डिस्पैरिटी अच्छी प्रभेद अच्छी कि गर्ल्स चाइल्ड मान को एजुकेशन को आमे रिड्यूस कर दौचे तांको मेनस्ट्रीम को आनिबा को दौना है तो सेमन को आमे केमिति मेनस्ट्रीम को आनिबा जो डिस्पैरिटी जो मिसकनसेप्शन जो अंधविश्वास रही आसीचे से अंधविश्वास को ब्लाइंड बिलीफ को आमे केमिति दूर करि परिबा तार मेन मोटो रहितिला गर्ल्स एजुकेशन ना। देन 12 नंबर ए चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एम्फासाइजेस तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम टा मेनली कौन एम्फासाइज करि थे सब्जेक्ट कंटेंट टीचर अथॉरिटी लर्नर्स इंटरेस्ट एंड नीड्स ना एग्जामिनेशन मार्क्स कोटा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एम्फासाइज करि थे बहुत इजी अच्छे एटा भी समस्त आंसर दे परिबे यस लर्नर्स इंटरेस्ट एंड नीड्स से तांकर कॉन्टेक्स्ट कौन अच्छी से को कॉन्टेक्स्ट को सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट रे रहूची तार नीड्स कौन रही तार इंटरेस्ट कौन रही सही गोटे ग्रुप ऑफ पीपल इंटेलेक्चुअल लेवल केते अच्छी तो सबू को देखिक आमे कौन करवा दरकार ना आम करिकुलम टा से हिसाब रे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम टा चाइल्ड नीड्स चाइल्ड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट तार इंटरेस्ट तार इंटेलेक्चुअल लेवल हिसाब रे ही आमे सही हिसाब रे करिकुलम बा सिलेबस प्रिपेयर कले गोटे टीचिंग सिस्टमैटिक हे पारिबो। नेक्स्ट 13 नंबर कोर करिकुलम मेनली फोकसेस ऑन कोर करिकुलम टा कहा ऊपर फोकस करि थाए ऑप्शनल सब्जेक्ट एसेंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस लोकल एक्टिविटीज
Co-curricular activities. Core curriculum mainly focus on ऑप्शन बी राइट आंसर ना एसेंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस सत्य सुंदर जोटा 10 नंबर अच्छी से चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स हम CWSM ओके 14 नंबर NCF 2005 एम्फासाइजेस व्हाट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF रो फुल फॉर्म मन रखि था मन तो रखि थिबो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो एम्फासाइजेस व्हाट ना rote learning examination oriented teaching learning without burden teacher dominance yes learning without burden is the correct answer से कौन कहिदिला shift from rote learning तार जो प्रिंसिपल थिला पांचटा से कहिदिला rote learning नुह shift from the rote learning रो हमें शिफ्ट करबा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टीचिंग से कहि नथिला से कौन कहिदिला ना फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी हमें किमिति करबा एग्जामिनेशन सिस्टम रे टीचर डोमिनेंस से कहि नथिला से लर्नर सेंटर्ड ऊपर फोकस करिथिला लर्नर सेंटर्ड ऊपर फोकस करिथिला देन से कौन फोकस करिथिला ना डेमोक्रेटिक वैल्यू छुआ भितरे केमिति डेमोक्रेटिक वैल्यू आनि परिबा एंड लर्निंग आउट ऑफ द क्लासरूम सिचुएशन हमें गोटे प्रैक्टिकल वे रे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज माध्यम रे छुआ मानकु केमिति लर्निंग प्रोवाइड करि परिबा ओके मैडम क्लास टाइम एडी लेखा है पिला माने प्रत्येक गुरुवार दिन तमर प्रत्येक गुरुवार दिन 10 टारे ही तुमरो जेटीर क्लास हबो ओके प्रत्येक गुरुवार एतिके मन रखता प्रत्येक गुरुवार दिन 10 टारे ही तमरो जेटीर क्लास हबो रेगुलरली एपाली जेते गुरुवार आस्तबो सब सप्ताहर गुरुवार रे ही आमे जेटी पई क्लास आनिबा नेक्स्ट 15 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्ड ग्रोथ इज इनकरेक्ट चाइल्ड ग्रोथ पई एठी स्टेटमेंट दिया छि कोउटा गोटे इनकरेक्ट ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट ग्रोथ इज क्वालिटेटिव मैटर ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन एज ना एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन ग्रोथ आर नॉट अज्यूम्ड प्रणाम अंजलि कोटा पिला माने ग्रोथ रिलेटेड yes option B that is growth is a qualitative matter next 16 number the qualitative change in personality of children refers to growth maturation invisible change na visible change personality रे जो change ता आसी थाए सेटा कोन कहबा the qualitative change in personality हमर जो personality रे गोटे qualitative change आस्ते ताको हमें कोन कहबा invisible change तमरा पर्सनालिटी तम बिहेवियर मॉडिफिकेशन काहे के हेता है पिला माने यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मैच्योरेशन तुम्हारा मैच्योरेशन तुम्हारा मैच्योरिटी आसीबा द्वारा कौन हेता है ना तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारा पर्सनालिटी तुम्हारा कथा कहबार शैली सब किछि रा चेंजेस आसी थाए तो सेते बेले ही तुम्हारा गोटे क्वालिटेटिव चेंजेस आसी थाए तुम्हारा डेवलपमेंट सेते बेले हुए बोली आमे कहू जेते बेले तुम्हारा मैच्योरेशन तो लाइफ लॉन्ग हेई थाए तमे मैच्योरिटी तुम्हारा डेवलप हे जाई थाए स्टिल योर डेथ तो कौन नो वन टॉट ए 8 month old child टू क्रॉल करबा गोटे 8 month चाइल्ड को केही पे सिखाई ना हांती बट वन डे द चाइल्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग on the part of the child it shows his her growth development maturation na morphogenesis नमस्कार मिलनम बाबा रे से लिखलेनी 2026 रे बीएड पास आउट हेबा को थिबा पिला जय कौन हम पिला माने एटा 17 नंबर
वेरी गुड जो माने ऑप्शन सी दौच एटा मैचुरेशन पिला माने हबो डेवलपमेंट हबो नाही तम सिलेबस रे अछि जेतेबेले हमें पढिबा सेतेबेले बुझी पारिबो द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड फिजियोलॉजिकल मेथड कंपैरेटिव मेथड डेवलपमेंट मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड यस मु एठी तम मानकु गोटे क्वेश्चन पचार को चाहे यार त आंसर दोथबो कि तुम्हें नेक्स्ट क्लास रे कौन चाहूछ आमे थियोरेटिकल आसीबा ना एमते एमसीक्यू आसीबा ना किछि गोटे क्लास रे थियोरेटिकल आसीबा टॉपिक वाइज जेमते कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जेमते कि इंक्लूसिव यस डेवलपमेंट मेथड इज करेक्ट कौन आसीबा तुम्हें सजेशन दियो तो नेक्स्ट सैटरडे कहूची नेक्स्ट थर्सडे आमे सेही ऊपर आसीबा तो कौन नहीं के आसीबा थियोरी ना एमिति टॉपिक वाइज एमसीक्यू इफ तमने थियोरी कहवा आमे कोनसी चैप्टर थियोरी आनिबा नलै एमसीक्यू आनिबा ठीक अछि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रु ही आमे हमर थियोरी क्लास स्टार्ट करबा टॉपिक वाइज नेक्स्ट गुरुवार रे ओके तो देखो मैचुरेशन इज द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म डिफाइंड बाय थॉर्नडाइक स्टैटन हॉल ना शेरमैन ओके ठीक अछि निहाती निहाती डन नेक्स्ट गुरुवार तम विश अनुसार ही सही आनिबा तो देखो मैचुरेशन इज द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म डिफाइंड बाय कहा द्वारा डिफाइन करा जाय छि पिला माने वेरी गुड मोनालिसा एटा हॉल ही राइट आंसर हबो राइट आंसर होची ऑप्शन सी हॉल ओके नेक्स्ट 20 नंबर मैचुरेशन इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस मेंटल प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस मैचुरेशन टा कोन वेरी गुड ऑप्शन डी मैचुरेशन इज कॉल्ड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस मैं यूपी से हूँ मैं उससे ओएसएससी जेल के लिए कुछ भी भाई भाई मु कोठी ओएसएससी सीजीएल रो क्लास करूची भाई सब क्लास रे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छुंक न मानले तुम क्लास टा शांति होनी 21 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ द कम्युनिटी इन सपोर्टिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एटा कौन कहूची यस अनुषया ठंडा हे जाईची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ कम्युनिटी इन सपोर्टिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज देखिबा ऑप्शन ए ignoring the needs of the children with disabilities b providing awareness resources and social support for inclusion तो छुआ मानन को inclusion पई social support awareness और resource provide करिबा ना c limiting the participation of children with disabilities in social activities छुआ मानकर social activity participation को limit करिबा ना encouraging children with disabilities to avoid mainstream school बी 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 बहुत बढ़िया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पिला माने प्रोवाइडिंग अवेयरनेस रिसोर्सेस एंड सोशल सपोर्ट फॉर इंक्लूजन वेरी गुड 22 नंबर ह्यूमन रिसोर्सेस इन द डिसेबिलिटी सेक्टर शुड आइडियली ह्यूमन रिसोर्सेस डिसेबिलिटी सेक्टर रे सेटा आइडियली कोन सपोर्ट करि थाए ना फोकस ओनली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स ना इंक्लूड ट्रेन्ड स्पेशल एजुकेटर therapist, counselor and support staff. Option C replace teacher with volunteers only. Na D work only with children with physical disabilities. ना भल नहीं कटक रु बिलोंग करे एस कुमार कोटा हम पिला माने ह्यूमन रिसोर्सेस इन द डिसेबिलिटी सेक्टर शुड आइडियली बड़ा ऑप्शन भाई तम माने बड़ा ऑप्शन काली ओटीटी ओएसटीटी रे क्वेश्चन देखिछो ना यस ऑप्शन बी करेक्ट हबो किंतु काली ओडब्ल्यूएसटी रो क्वेश्चन देखिछो ना बड़ा ऑप्शन में पिलंग का साथ देनी सो केबे भी बड़ा ऑप्शन सहित जीवनी नेक्स्ट 23
providing early intervention services such as physical therapy and speech language pathology immediately following the diagnosis of a developmental delay is an example of which course of disabilities prevention? Tertiary prevention, primary prevention, universal prevention, secondary prevention. तो ये जो प्रोवाइडिंग अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज फिजिकल थेरापी स्पीच लैंग्वेज एटा सेकेंडरी प्रिवेंशन आसो प्राइमरी प्रिवेंशन हबो नाही दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑप्शन डी हबो देन द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चिल्ड्रन विथ डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया को कौन कह जाए अटेंशन डेफिक डिसऑर्डर ना डाइवर्सिटी इन थिंकिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग ना inability to read fluently ना engaging in repetitive locomotor action कोटा हबो dyslexia very good option C inability to read fluently attention deficit ADHD जोटा कि ऑटिज्म डिसऑर्डर सेटा होची अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जोटा देन इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली राइट आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग एटा हबो क्रिएटिविटी देन एटा कोन एंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन तो कौन लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जार हेइथिबो बट यार राइट आंसर होचे डिस्लेक्सिया इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली ओके नेक्स्ट 25 नंबर स्टूडेंट्स विथ डिस्कैलकुलिया फेस डिफिकल्टी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द नंबर ग्राफ्स ऑप्शन बी नंबर डीलिंग सी नंबर प्लेसिंग D problem related to spatial concept E problems related to reading problems choose the correct answer from the options given below choose करा कोटा correct हबा students with dyscalculia for difficulty in the following देखिए किए राइट आंसर कहूछ बी कहले किए जगन्नाथ गुंडा अंशुबाल पंडा अंशुबाला लक्ष्मी प्रिया भी बी कहले ओके ज्ञान मंजर भी बी कहले वेरी गुड जो मन बी कहूछ कौन ना नंबर्स डीलिंग हबो नंबर्स प्लेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पेशल कांसेप्ट ता भीतर कनेक्शन सही जिनसडा हेई परिबो नाही ओके नेक्स्ट The term mental retardation is replaced with which term? Intellectual disability, mental weakness, ना intellectual backwardness, intellectual disadvantage. जोटा mental disorder कुहा जाए सेटा बर्तन रिपेल्स कौन हेछि आमे कहूचे mental retardation सेटा को आमे बे कौन कहूचे mental retardation न कहेकी यस यस ऑप्शन नहीं जमती कहले मोनालिसा बेहेरा जहाँ हमको परीक्षा रे ऑप्शन देइथिबो सेटा हमें भाबिले भी गोटे गोटे समरी एमिति हुए एंड हमको सेठी आंसर देबा को हुए 27 नंबर व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन को इंप्लीमेंट करबा कोन पई डिफिकल्टी अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स नो टेस्टेड मेथड इजी टू इंप्लीमेंट नो टेस्टेड मेथड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स कोन हबो 27 नंबर आसिला बेले सत्य सुंदर तमे 23 नंबर को पचार yes तारा होची ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 28 नंबर which of the following is the technique of classroom management where a student displaying negative behavior is separated from the rest of the class option A
साटिशन टेक्निक, एक्सटेंशन टेक्निक, कॉर्पोरल टेक्निक ना टाइम आउट टेक्निक कोटा हम पिला माने डी 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 देखिए को माने 27 नंबर 28 नंबर को माने कहूछ 28 नंबर कौन हबो 28 नंबर समस्त आंसर देबो ट्राई करो मैम बुक कहाँ से ले ओके पिला माने एठी राइट आंसर हबो कि टाइम आउट टेक्निक काहे की हबो तो टाइम आउट टेक्निक होउची गोटे बिहेवियरल टेक्निक राइट आंसर होउची टाइम आउट टेक्निक इट इज ए बिहेवियरल टेक्निक एथरे कोन हे थाए ना हमरो जहा जहा रहिला जत्तक भी तम भितरे जहा जहा रहिची कोन ना अनडिजायरेबल बिहेवियर तमरो जहा भी अनडिजायरेबल बिहेवियर अछि ताकू हमें कोन करबा मॉडिफाई करबा कहा द्वारा ना मॉडिफाई थ्रो रेनफोर्समेंट ओके तो टाइम आउट टेक्निक होची कोन ना गोटे छुआ भितरे जहा जहा अनडिजायरेबल बिहेवियर अछि सब अनडिजायरेबल बिहेवियर को हमें कोन करबा मॉडिफाई करबा कहा द्वारा ना कोन मॉडिफाई करबा जहा द्वारा कि रेनफोर्समेंट द्वारा हमें तांको रेनफोर्समेंट दबा एंड रेनफोर्समेंट मध्य रे तांकर बिहेवियर टा बदली जिवो देन तमरो साटिएशन टेक्निक कोन कि छुआ मानू को एनकरेज करा जिवो नेगेटिव बिहेवियर को से माने एमिति करा जिवो इथिरे ए साटिशन टेक्निक होउची जोथरे कि छुआ को एनकरेज करा जिवो एमिति एक्टिविटीज करा जिवो तमे एक्टिविटीज प्लेट करबो जोथरे से एक्टिविटीज द्वारा छुआ माने रियलाइज करिवे से माने निजे रियलाइज करिवे कि तांको बिहेवियर टा होउची इनएप्रोप्रिएट ओके Which of the following is the technique of classroom management? Classroom management रा ए भितरो टेक्निक टा where a student displaying negative behavior जोठारे छुआटा negative behavior display करूची is separated from the rest of the class. Okay? से rest of the class रो separate अछि. Okay? तो को टेक्निक टा तमे यूज करिवो साटिएशन टेक्निक ना एक्सटेंशन टेक्निक ना कॉर्पोरल पनिशमेंट ना टाइम आउट टेक्निक तो एटा होची राइट आंसर टाइम आउट टेक्निक काहे कि ना जोथरे छुआटी ऑन बिहेवियर अनडिजायरेबल तम रेस्ट ऑफ क्लास टू से सेपरेटेड केमिति हेई परिबो कि जते बेले से क्लास रे डिस्प्ले करूची किछि नेगेटिव अनडिजायरेबल बिहेवियर तो सेते बेले तुमे टाइम आउट टेक्निक बिहेवियर एथे लागि यूज करबो कि जहा भी अनडिजायरेबल बिहेवियर अछि एज ए टीचर तुमे थ्रो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट छुआटर केमिति से बिहेवियर डिजायरेबल बिहेवियर रे परिवर्तन हबो तो सेहित लागि तमे ता ऊपर फोकस करिवो एंड जोटा तमरा साटिएशन टेक्निक रहिला कि छुआ मानन को एनकरेज करा जिवो जो छुआ माने नेगेटिव बिहेवियर करूछन से मानन को एमिति एनकरेज करा जिवो एमिति सिचुएशन करा जिवो जोटी कि से माने निजे बोर हे जिवे तांको बिहेवियर रे नले से माने निजे सेल्फ रियलाइज करिवे ई साटिएशन टेक्निक द्वारा कि यस मु जो बिहेवियर टा क्लासरूम रे करूची से बिहेवियर टा इनएप्रोप्रिएट ओके नेक्स्ट कोन एक्सटेंशन टेक्निक तो एक्सटेंशन टेक्निक माने आमे आज ए टीचर नो रेस्पॉन्स सी जहाँ क्लासरूम रे करूची करू तार कोनोसी अनडिजायरेबल बिहेवियर को आमे कोनोसी रेस्पॉन्स दबा नाही आमे सेमिति पढाई जिबा सी जहाँ रेस्पॉन्स करूची करू सोदू बाडू मारू सी क्लास रे जहाँ डेउची नाचुची एक्स वाई जेड जहाँ भी अनडिजायरेबल बिहेवियर करूची आमे तार बिहेवियर को कोनोसी रेस्पॉन्स दबा नाही एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट माने तमे समस्त जानिछो हैला कि फिजिकल पनिशमेंट कोनोसी फोर्सफुल एक्टिविटी बा फिजिकल पनिशमेंट को आमे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहूछे ओके बुझिएला चारटा का ऑप्शन कि साटिएशन टेक्निक द्वारा तमे एनकरेज करबो जहा द्वारा पिलाटा निज बिहेवियर द्वारा निजे बोर्ड हे जिवो
देन सेकंड कोन आसुची तमरो कि एक्सटेंशन टेक्निक तमरो आज ए टीचर कोनोसी रेस्पॉन्स रहइबो नै कॉर्पोरल पनिशमेंट माने आमे फिजिकल पनिशमेंट दे कि ताको ठीक करबा टाइम आउट टेक्निक माने तारा जहां अनडिजायरेबल बिहेवियर अछि ताको रेनफोर्समेंट द्वारा आमे डिजायरेबल बिहेवियर परिवर्तन करबा एवं से जो आउट ऑफ द क्लास हेइ जाई छि तारा किछि नेगेटिव बिहेवियर लागि सब पिलांक परि मध्ये से हेइ पारिबो ओके नेक्स्ट 29 नंबर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज पॉज चैलेंजेस टू जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज अछि पिला माने सेटा कोन चैलेंज करूछि लर्न एंड डिस्प्ले स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ना अंडरस्टैंड वर्बल कम्युनिकेशन सी एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ना पार्टिसिपेट इन गेम्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन कोटा हबो बहुत बढ़िया समन्विता हिसाब रे जोटा बड़ ऑप्शन मैम सेटा ही करेक्ट आंसर यस एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लोकोमोटर माने ही हमर जो मोटर एक्टिविटीज रहउची जरा सेही प्रॉब्लम होउची से कोनसी ऑब्जेक्ट को माने शिफ्ट करिया पई अनेबल हबो 30 व्हिच मेथड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स जो छुआ माने CWSN रहउछंदी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स तांका पई को एक्टिविटीज ता सुटेबल नुहे डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डिफरेंट टीचिंग मेथड ना ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज कोटा हो पिला माने 30 नंबर कोन हबो बी बी से कौन दिला डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विथ डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम निहाती डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देन डिफरेंट टीचिंग मेथड्स निहाती भाबरे ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दुईटा रहला बी हबो ना डी हबो पिला माने एडी चिल्ड्रन कथा पचरा जाईछि चिल्ड्रन कथा पचरा जाईछि तो बी हबो नाही ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर डायरेक्टली रिलेटेड नु ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज रिलेटेड टू टीचर ऑल अदर थिंग्स आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को माने जते बेले भी मु तो यूट्यूब क्लास रे केबे कहिनी मु पेड क्लास रे सब बेले कहिछि कि जते बेले भी पढैछि जो छुआ माने जदी अछंती जानि थिबे कि हमरो जो CWSN रा माने होउछि कि छुआ माननकु हमें कोन करिबा डे टू डे लाइफ रे एक्टिव करेबा सेमानंको पाई स्पोर्ट्स एवं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रे सेमाने केमति जॉइन हेई परिबे तांको सेहिथिरे हमें कोन करिबा ना इन्वॉल्व करेबा स्पोर्ट्स एवं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रो म गोटे एग्जांपल देइथिली जेमिति कि छुआटा रेस रे दौड़ी पारुनी किंतु आमे सेटु काकू कहि परिबा कि तू स्पोर्ट्स एक्टिविटी रे अनाउंसमेंट कर कि कोन करिवार अछि या परे किए जीव किए न करिवो अनाउंसमेंट वन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना तमरो फंक्शन होची जे एंकरिंग करूछथि से कोन पार्ट ऑफ द फंक्शन नो कि ओके तो सेथि लागि कि कुआ जाय छै डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तामे रहिबो किंतु ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज ताको दिया जिवो टीचर माननको नेक्स्ट 31 इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज रिक्वायर्स व्हाट inaccessible infrastructure inequality opportunity barriers to participation non discrimination कोटा हो पिला माने यस गंगाधर एटा फर्स्ट क्लास
The right answer is option D, that is non-discrimination. Next, 32, growth differs from development mainly because growth is quantitative and continuous, quantitative and measurable, physiological and emotional, lifelong and holistic. कौन होगा पिला माने? Growth differs from development mainly because of growth is quantitative and measurable. Very good. Next देखो 33, which of the following best reflects the principle of continuity in development? Development रो continuity रो principle कोउटा कहिछि? जल्दी जल्दी टिके पिला माने आंसर दियो. 33 कौन हबो? तो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम होम टू टर्म, जोड़ा कंटिन्यूटी रा कथा कहिछि होम टू टर्म जाय हमर डेवलपमेंट हेइ थाए. नेक्स्ट 34, assertion and reasoning question अछि. आंसर देबा को चेष्टा करो. मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड follows a definite sequence. रीजन होछि डेवलपमेंट इज governed by maturation of the nervous system. कोटा करेक्ट हबा पिला माने? तो 34 होची both A and R are true and R is the correct explanation of A. सॉरी पिला माने बहुत सारा प्रॉब्लम तुमको होतुवा मोर ए जो कर्कश स्वर रे कोन करबा देह खराब अछि. 35, टीचर नोटिस दैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड कांसेप्ट बट फेल्स इन टू एक्सप्रेस देम वर्बली. दिस इंडिकेट्स डिले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट. तो टीचर नोटिस करछन्ती चाइल्ड अंडरस्टैंड करबा पे कांसेप्ट फेल होची किंतु एक्सप्रेस ताको वर्बली करि पारु नाही. तो सेटा कोन होबा 35? Yes, option C, language development. Next 36, a child raised in a stimulating home environment shows better academic performance than peers. This highlights the role of heredity only, environment only, interaction of the heredity and environment, maturation only. तो इथरे 36 राइट आंसर होची ऑप्शन सी, interaction of heredity and environment. 37, moral reasoning based on fear of punishment is common in adolescent, early childhood, late childhood, na adulthood. Moral reasoning based on fear and punishment. (37) Yes, heredity and environment. 37 कौन होगा? 37 होगा B की fear and punishment early childhood रे moral reasoning को नहीं कि बहुत सारा होता है जोटा कि early childhood C हबनी B हबो early childhood time रे होता है. 38, which pair is incorrectly matched? Physical development, height and weight, cognitive development, thinking and reasoning, social development, peer interaction, emotional development, IQ. कोटा पिला माने कोटा incorrectly match हेची 38. आंसर दियो 38 मिलनम. ओके यस IQ एटा हबा कथा नो, एटा हबा कथा EQ. तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी. नेक्स्ट, which factor has the least direct influence on physical growth? Physical growth ऊपर को फैक्टर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहउची न्यूट्रिशन, हार्मोनीज, इंटेलिजेंस, हेल्थ. को फैक्टर टर डायरेक्ट फिजिकल ग्रोथ ऊपर इन्फ्लुएंस रहउची पिला माने लीस्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देछि न्यूट्रिशन नुआ पिला माने लीस्ट एंटी देछि देखो लीस्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. तो राइट आंसर होछि इंटेलिजेंस. हमरो फिजिकल ग्रोथ रे इंटेलिजेंस लीस्ट माने बहुत कम रहउछि. नेक्स्ट देखो 40 नंबर, डेवलपमेंट डिले रिफर्स टू काहे की 40, development delay refers to delay in achieving age appropriate developmental milestone is the correct answer. And yes, there are PDF की जहाँ भी related तुम मनों को पाइबार अच्छी. आज ये 40 टा क्वेश्चन ही पिला माने थिला. and जहाँ को PDF किंबा मो सहित कनेक्ट हबार अच्छी किसी डाउट क्लियर करिबार अच्छी केही भी
यूट्यूब सेशन ने जो माने पेड बैच स्टूडेंट नुहंती कि किछि नो किछि प्रॉब्लम नाही ऊपर जो टॉप रे तमरो यूट्यूब सेशन ने चैट बॉक्स रे लिंक ता अछि सेटा होछि मो टेलीग्राम लिंक जो माने भी जानि नाहंती म आउ थरे कहि दोछि जदि मो सहित कनेक्ट हबार अछि त सेई टेलीग्राम लिंक रे जॉइन हे कि तुमे माने मो सहित कनेक्ट हे परिबो एंड आज परठू जहां भी पीडीएफ अपलोड हबो जहां हबो ऑफिशियल चैनल ले मु किछि करबी नाही निजर एई चैनल ले ही करबी ओके समन्विता टॉप ऑफ द चैट मु पिन कर देइछि टेलीग्राम लिंक को समस्त जाई कि सेठु आनी परिबो एंड आउ गोटे इन्फॉर्मेशन तुम समस्तक पई तो एबे सरस्वती पूजा ऑफर चली पिला माने जोथि लगी स्पेशल ऑफर तम पई अछि जेमिति कि तमरा ओडिसा महापैक हो जोटारे 3999 अछि एंड तुमे कूपन कोड यूज कले तुमरा सेइथरे किछि डिस्काउंट हबो ता सहित जो माने एसएसबी टीजीटी रे एपर्यंत एनरोल करिना एंड एनरोल करिया को चाहुछ किछि भाबुतलो अधिक हेइ जाउछि तो कि किछि भी तम माने मध्य एही सरस्वती पूजा ऑफर को यूटिलाइज करि परिबो एबे प्राइस डॉर्फ हेछि एंड जदि भी किछि इन्फॉर्मेशन केमिति जॉइन करबो कोन जॉइन करबो संकल्प बैच हो किंबा तमरो महापैक हो जो माने डायरेक्ट सिटी तमे जहां भी एंट्रेंस पई प्रिपेयर हो जो टीचिंग पई जदि हबा को चाहुछ हेइ परिबो ता सहित अभिनव 4.0 तमरो जूनियर टीचर पई पिला माने बहुत जल्दी आसुची जोटा कि 6 फेब्रुआरी 2026 रु स्टार्ट होबा को चाहुची बोथ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी तो जो माने मध्य जॉइन हबा को चाहुच तुमे माने मध्य जॉइन हे पारिबो तम माने कूपन कोड यूज करबा द्वारा तुमको किछि डिस्काउंट मध्य मिलिबो जोटा कि सब बेले होउची ओके देन ता सहित गोटे जिनस तम माने जदि किछि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिया को चाहुच सीबीडी एग्जाम पाई तो निहाती भाबरे पार्ट 1 न तम पाई ई बुक्स मध्य गोटे अछि तमे सेटा मध्य तमरो ऑनलाइन रे ऑर्डर करि परिबो कूपन कोड यूज देकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया पई जूनियर टीचर एग्जाम पाई कंप्यूटर हो जनरल इंग्लिश हो करंट अफेयर्स जनरल ओडिया रीजनिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ओके नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट थर्सडे हबो एंड सेही थर्सडे रे आमे थियोरेटिकल क्लासेस करिवा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो ही आमे थ्योरी क्लास आरंभ करिवा ओके बी रेडी फॉर नेक्स्ट थर्सडे फॉर योर थियोरेटिकल क्लासेस ओके नेक्स्ट क्लास गुरुवार ही हबो प्रति गुरुवार 10टा बेले पिला माने हमर ए जूनियर टीचर रा क्लासेस ही हबो ओके तो जो माने चाहूछ ए बुक ता भी नै पारिबो कोड यूज करि पारिबो YT46 जूनियर टीचर पई तमरा प्रैक्टिस बुक जो माने अभिनव 4.0 रे भी जॉइन करिया को चाहूछ तुमे माने जॉइन करि पारिबो एंड एबे तुमरा सरस्वती पूजा ऑफर चली छि केही जदी महापैक रे निजो को एनरोल करिया को चाहूछ किबा एसएसबी टीजीटी तुमको एनरोल करि पारिबो एंड ये सेठी तुमको सॉरी तो पिला माने मैम अभिनव रे जॉइन हबा पई केमिति कोन आउ थरे कुहंतु ठीक अछि जस्ट वेट तो एठी जो नंबर टा आसुची तमरा स्क्रीन ने 8130406247 तो सेही नंबर को तुमे माने कॉल करि पारिबो ओके ता सहित तुमे माने कोड यूज करि पारिबो कूपन कोड यूज करि दबो YT46 जोतरे कि तुमको कोन हबो ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट जहा मिली पारिबो रुहा बुक ता देखै दउ जाउ थरे पिला माने जस्ट वेट तो एठी देखो ओडिशा जूनियर टीचर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 क्लास 1 टू 5 बा क्लास 6 टू 8 रे तमरा गोटे ई बुक मिलुची ओडिशा जूनियर टीचर पई आडा 247 तरफ रु जो माने ई बुक ता परचेज करबा को चाहू छ मध्य तुमे आडा स्टोर रु मध्य परचेज करि परिबो यूज कोड Y246 ता द्वारा मध्य तमरा डिस्काउंट किछि हेइ जिवो एंड 100 समथिंग पडुची ता भितरे तुमे 2000 प्लस एमसीक्यू पाई जिवो तुमरा प्रैक्टिस करबा पई ओके एंड अभिनव 4.0 रो क्लास 6 फरवरी स्टार्ट होची तम माने मध्य कोड यूज करी की जॉइन हेइ परिबो न्यू बैच रे जोटा की जूनियर टीचर एग्जाम पई ओके जो माने चाहू छ एसएसबी टीजीटी एबे मध्य ऑफर चली छी एसएसबी टीजीटी रे तुमे जॉइन करि परिबो सरस्वती पूजा ऑफर जूनियर टीचर रहिला महापैक रहिला किंबा ई बुक जदी के परचेज करिया को चाहू छ निजर प्रैक्टिस पई जूनियर टीचर पई निज पाखरे रखी की ताको मधे परचेज करि परिबे हमें 100 मार्केट को गले पिला माने
मोमो गुपचुप खाई के हमें 100 सारी दौचे 100 किंबा 150 आम निहाती भाव में गोटे बुक रे जदि आमको एते सारा क्वेश्चंस मिलूँ 6 फेब्रुआरी रु केते दिन पाई मैम तुम वैलिडिटी सब टू डबल वैलिडिटी अच्छी पिला माने प्रियंका डबल वैलिडिटी अच्छी ओके बहुत प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी बुक अच्छी तो तुम्हें मैंने परचेज करि परिबो पिले एमती आम बरा आलुचप गुपचुप सिंगड़ा खाईदेले मार्केट गले आम बहुत सारा टंका खर्च कर दौचे ओके वैलिडिटी तुम अच्छी तुम एग्जाम दे सारा पर भी तुम वैलिडिटी अच्छी डबल वैलिडिटी अच्छी प्रियंका ओके एठी देखि पारुथबो तुमरा सबु जिंस रे 2x वैलिडिटी अच्छी पिला माने तुम्हें महापैक नियो 2x वैलिडिटी अच्छी 30% ऑफ अच्छी तुमरा सरस्वती पूजा ऑफर पाई ओके तुम्हें जहाँ भी नियो तुम पाई डबल वैलिडिटी अच्छी ओके प्रियंका ठीक अच्छी तमे एडी कोड भी यूज कर परिबो YT46 ओके जो माने बुक नबा को चाहुछंती ए कोड यूज करके YT46 बुक मध्य नहीं परिबे YT46 कोड यूज करके बुक ता आपण पई बहुत हेल्पफुल हबो एग्जाम पई प्रैक्टिस करिया पई आपण अभिनव 4.0 रे भी जॉइन हेई परिबे ता सहित आपण माने जॉइन हेई परिबे कोथरे SSB डिजिट रे ठीक अछि पिला माने जो माने चाहुछंती बाध्य बाध्यकता नहीं जॉइन हेई परिबे निजरा प्रिपरेशन आम संगे मिसिकी प्रैक्टिस करि परिबे किंतु इफ यू आर इंटरेस्टेड बुक ता निहाती भाबरे परचेज करबो तमरो काम रे आसीबो थैंक यू एवरीवन।